जिम मेहनत करनी पड़ती है. How much we have to work hard, right? Yes or no? And then when we leave it, then we are back to square one, or maybe even more than that. Yes or no? Okay, Reena ma'am says me. I'm sure there are many people who will be agreeing with me, Reena ma'am. Okay, तो अभी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं something in which you do have to work hard. Don't worry, you have to work hard, but not as hard as you've been working in yesteryears to get rid of your weight. So how many people are interested to know that? कितने लोग जानने के लिए उत्सुक हैं आखिर ये है क्या जिसमें डाइट करने की जरूरत नहीं है और वेट लॉस भी हो जाएगा? You know how it is going to happen? Through your internal system, through building on your metabolism. Okay, so if you give me 2 minutes of your screen time, I would like to share the details of the Ameda program. कि ये weight loss आखिर होगा कैसे? Okay? Okay, Anil ji, can you see the screen, please? Yes, yes. Okay, so Ameda weight management with Kumbhak, the healthy way, the correct way. Okay, so we have to think about the healthy way of getting rid of the extra pounds, right? The extra flesh in our body. तो ये हेल्दी वे होना चाहिए क्योंकि आप डाइट करते हैं तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती ही है जो इनिशियली पता नहीं चलता है, बट आगे जाके बहुत सारी और तकलीफें शुरू हो जाती हैं. तो ये जो तरीका है इससे आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी नहीं होगा क्योंकि डाइट तो आप कर ही नहीं रहे, राइट? और पसीने भी निकलेंगे. तो ये कौन सा तरीका है जिससे जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, डाइट भी नहीं करनी है, बट पसीना तो फिर भी निकलेगा? Oh, we'll sweat in this heat. So we all willing to know. So namaskar, I welcome you all to the Ameda webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique way to manage your weight without the diet plans that restrict you and are not the correct way to stay in shape. Now, I'd like to introduce you all to Swami Rajvibhu ji, a rare Kumbhak yogi. Swami Rajvibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has a unique perspective about the human body and how it functions and how it can be corrected and balanced back to its natural state. So what are we trying to harp at? The natural way of losing weight, the natural state. So who is this webinar for? For people who are tired of temporary solutions and are looking for a natural and permanent solution. Okay, not something that is not long lasting. हमें चाहिए जो long lasting हो और हमारे शरीर में तकलीफ भी ना दे, nutrition deficiency भी ना हो. We want it all in a good and a healthy manner. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their fat weight issues. So weight management with Kumbhak, the right way, freedom from restrictive diet plans. What you will learn in today's webinar. What is fat? Fat आखिर है क्या? जो आपको बाहर दिख रहा है वो फैट है. So why the body creates fat? ये फैट जो है ये कुछ रीजन के लिए बॉडी क्रिएट कर रहा है.
क्यों कर रहा है? वो रिस्क फैक्टर से बाहर निकालने के लिए फैट क्रिएट करता है आपके बॉडी में. A new way to look at weight management. What is कुंभक? आखिर कुंभक है क्या? Why a need for kumbhak? How kumbhak works on the body? How kumbhak works on our metabolism? So let's hear from Swami Rajvibhu ji about how to lose weight in a healthy manner. So here I stop the screen sharing. Thank you for listening to me patiently. I will just give you details of how we are going to proceed. We will be sharing the video of Swami Rajvibhu ji. Then we will be sharing the program details and somebody who's been doing Ameda and her experience and journey with Ameda. And lastly, we will be taking up your question and answers with Swami Rajvibhu ji himself coming live to answer all your questions. So please write your questions and we will be taking them up. Write your name and contact number so that we can get in touch with you. Thank you so much. Namaste. And over to Anil ji to share the screen. Ameda. First of all, the meaning of this word is basically whatever is excess in a system, if that excess is taken care of, that state is called as Ameda. Or in simple terms, Meda means fat, Ameda means fat free. लेकिन आजकल फैट फ्री बहुत फैशन में है ना. So Ameda means fat free. Now, how this body can get rid of whatever is excess in this body? So first, let us understand why it happens, why this excess happens. In relatable terms, आपको बड़े ज्ञानी वाले शब्द बोले जाते हैं ना, पढ़ाए जाते हैं. गूगल में जाओगे तो पता नहीं क्या क्या पढ़ने को मिलता ना. तो आप कैसे समझ सकते हैं? How can you correlate it with? तो मैं correlatable और relatable terms में आपसे बात करूंगा, so that you get it very clear. आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये क्या है. So the moment weight increases, आपके अंदर weight थोड़ा बढ़ जाता है. What is the first difficulty you get in? If you observe yourself, अगर अपने आप को observe करेंगे, तो जब पतले दुबले थे तो movement बड़ा आसान था ना. Moving around was pretty easy. The moment weight increases, movement becomes a little difficult. But what is the first thing that you can see, observe within you? Do you know your inhalation becomes short? आपका inhalation, सांस लेने की क्षमता जो है वो कम हो जाए. That is why if you do a little more work, आपकी सांस की आवाज आने लग जाती है. You inhale, you try to pull in more. हांफने लग जाते हैं आप. So this is the first thing, if you observe yourself. But also the problem is you are more observing the screens rather than yourself, है ना. आजकल तो स्क्रीन को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं ना अपने आप को ऑब्जर्व करने के मुकाबले. सो आपकी सांस कम आने लग जाते हैं. शॉर्टर ब्रेथ, इनहेलेशन ज्यादा. नाउ इफ इनहेलेशन बिकम्स शॉर्ट, डू यू नो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स इंपैक्टेड इन योर बॉडी? आपके शरीर में पहली कौन सी चीज पे असर आ जाता है? In Kumbhak Vijnana, we always relate inhalation with Agni. Inhalation को heat के साथ में relate करते हैं. So there is something called as metabolic heat.
आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक हीट वो कम बनता है. Again, the larger umbrella is termed as गार्ह्य पत्य अग्नि. क्या कम हो जाती है? गार्ह्य पत्य अग्नि. ये पूरा मेटाबॉलिक स्फेयर का पूरा अम्ब्रेला है. There are various kind of metabolism and this is the umbrella. So गार्ह्य पत्य अग्नि कम हो जाता है. Now, if metabolic heat happens, where does metabolism happen? Metabolism होता कहां? First step of metabolism happens in your liver. Liver में metabolism शुरुआत होती है. Then it happens on every cell and tissue. Every organ, cells and tissue. हर एक organ, cells और tissue में metabolism होता. Now, if गार्हपत्य अग्नि becomes less, everywhere the metabolism will become down. नीचे आ जाएगा. So whatever food you eat and the food becomes usable glucose, है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो आपके बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत कम हो जाएगी. बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज वीक. उतना जरूरत नहीं है एनर्जी का. तो क्या करेगा आपका लिवर? व्हाट विल द लिवर डू और व्हाट विल योर बॉडी डू? जो भी आपने खाया उसको स्टोरेज में डाल देगा. इजंट इट? नहीं, इट विल पुश इट टुवर्ड्स स्टोरेज. तो व्हाट विल हैपन? एडिपोज टिश्यू, फैट सेल्स वो बढ़ जाएंगे आपके शरीर में. स्टोरेज ज्यादा होगा. सिंपल, रिलेटेबल, समझ में आ रहा है? किससे रिलेट किया? व्हाट डिड आई कोरिलेट विथ? इनहेलेशन. इनहेलेशन से रिलेट किया ना. नाउ देयर कैन बी टू रीजन फॉर द शॉर्टनिंग अप ऑफ योर इनहेलेशन. वन, योर इंटरनल बॉडी फैक्टर्स. Second, external factors. So fundamentally, I am exploring 5 steps towards Ameda. पहली चीज क्या बताया? Inhalation, lack of inhalation. Why will it happen? Due to internal factors and external factors. But let us see if this becomes less. What else we get into? एक तो स्टोरेज बढ़ गया, यूजेबिलिटी कम हो गई. थोड़ा भी खाएंगे तो भी बढ़ते जाएंगे. दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल. यस और नो? कम भी खाएंगे तो भी वेट कम नहीं होता. तो भी वो बढ़ता ही है. क्योंकि वो तो बढ़ ही रहा है ना. आप थोड़ा भी डालोगे तो इट विल जस्ट एग्रीगेट. एग्रीगेशन ज्यादा हो रहा है. सो व्हाट एल्स? और क्या चीज होती है? So how much your body absorbs things? If you want to suck in a glass of juice, what do? You pull it in. मुंह से खींचते हैं ना. That is inhalation. Yes or no? खींचने की क्षमता कम हो गई ना आपकी. Inhalation क्यों कम हो गया? The strength of pulling in has gone down. So your body will not absorb proper nutrition. Yes or no? Nutrition नहीं मिलेगा. Deficiency होगी. Even the body is big, but there will be lot of deficiency. Vitamin deficiency, mineral deficiency, calcium deficiency. ये deficiency बहुत ज्यादा होगा. Now deficiency कम होता है. Apart from that, you know, inhaling less also means you have less acceptance to things. Yes or no? आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना किसी चीज को ज्यादा. Inhaling less also means less acceptance. What does it mean? Your body will create resistance. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. हैव यू हर्ड दिस वर्ड? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वेट बढ़ने से.
Have you heard this word? Diabetes हो जाएगी. Now I am correlating it with the real things. आपने अभी केवल शब्द ही सुना होगा, आपको ये नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है. I am telling you why this is happening. Now, if insulin is a hormone, will not other hormone resistance happen? It will also happen. So what will happen? In ladies, they can have a hormonal imbalance. Ladies can get into situations like PCOD, PCOS, endometriosis, hormonal imbalance, menstrual difficulty, difficulty in conception, infertility. Yes or no? ये सब सुना हुआ है आपने? I am just relating it. What will happen? Why will it happen? In males, insulin resistance, again, hormone resistance, infertility, diabetes, and deficiency syndrome. ठीक है? अभी आगे और थोड़ा बढ़ते हैं. This is not all. Just I am correlating with lack of the strength of inhalation. फिर क्या होगा? What else? If your body will have lot of imbalances and disease, your body will switch on survival indicators. सर्वाइवल मैकेनिज्म को स्विच ऑन करेगा ना, उसको तो बचाना है अपने आप को. तो आपके सर्वाइवल इंडिकेटर्स जो है वो हाई दिखने लग जाएंगे. व्हाट आर योर सर्वाइवल इंडिकेटर्स? डू यू नो योर ब्लड प्रेशर इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? योर शुगर लेवल इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? योर हॉर्मोन्स, योर इम्यूनिटी इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? योर व्हाइट ब्लड सेल इज अ सर्वाइवल इंडिकेटर? तो आपके अंदर क्या होगा? शुगर लेवल ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ जाएगा. Why will it happen? Because you are lacking in the strength of inhalation. I've given you a little hint. I can go on and on and on with this, but देखो कितना भी ज्ञान बोल लो, solution तो नहीं मिलता ना ज्ञान से. So how can you increase the strength of your inhalation? Inhale ऐसे खींच के नहीं, वो खींचने की कैपेसिटी तो कम हो गई आपके. समझो इस बात को. You can't do that. That is not a solution. So you have lost certain strength of your body. तो कितने स्ट्रेंथ है आपके बॉडी में? हाउ मेनी स्ट्रेंथ इज देयर इन योर बॉडी? देयर आर 6 बेसिक स्ट्रेंथ. व्हाट आर दोस? देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल. कितने हो गए? 6. So to increase the strength of inhalation, what you need to increase? How many bala? At least 3 bala. 3 बल आपको कम से कम बढ़ाना पड़ेगा. वो क्या है? What are those? धातु बल, दोष बल एंड शरीर बल और देह बल. ये 3 चीज है जो आपको बढ़ाना पड़ेगा. धातु बल, दोष बल एंड देह बल. Now, how you can increase it? कैसे increase कर सकते? This is the first step. I'm just talking about the first step. I'll talk about the other 4 steps also.
कोई भी स्ट्रेंथ आपको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाते हैं? नाउ एक एग्जांपल ले, लेट्स टेक वन एग्जांपल, बाकी मैं आई आल्सो टेक अदर एग्जांपल, बस यहां पे एक एग्जांपल ले. लेट्स पुश द अदर पाम, एक हाथ से विथ योर राइट फिस्ट लेट्स पुश द लेफ्ट पाम. थोड़ा पुश करो, धक्का दो, स्ट्रेंथ इंक्रीज करो, पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ाओ जरा, पुश इट हार्ड. कैसे पुश करना, कैसे पुश कर रहे हैं? नाउ लुक बिहाइंड, वंस अगेन डू इट, लुक बिहाइंड, सांस रोक के, यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ. सांस रोक के कर रहे हैं. हाउ कैन यू इंक्रीज योर बल? हाउ डू यू इंक्रीज योर बल? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. इफ यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, you will increase all the balance. पहला पार्ट बोल रहा हूं, केवल एक एग्जांपल दिया. I'll give more example. एक बात हमारे को समझ में आ गई कि where is the problem, what all we can get into and how to counter that. ये समझ में आ गया. सेकेंड स्टेप, मोटे इंसान को छू के देखें. जस्ट टच अ फैट पर्सन and touch a normal lean person. What is the difference? What is the difference you will feel? A fat person is cooler. You'll वो फील कैसा होगा? थोड़ा ठंडा फील होगा, थोड़ा ठंडा फील होगा एक नॉर्मल दूसरे बंदे के मुकाबले में. द फैट पर्सन विल फील अ लिटिल कूलर. आप करके देखो जरा, ठीक है ना? Do this these kind of experiments. That's how you will understand. So a fat person of the same age I'm talking about. बच्चे को छू के नहीं देखना, बच्चा फैट नहीं होता कोई, उसका मेटाबॉलिक हीट अच्छा होता. ऑफ द सेम एज अगर दो स्ट्रक्चर के बंदे को टच करके देंगे तो फैट पर्सन विल फील कूलर. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? The heat of the body is less. इतना समझ में आया? बिल्कुल सिंपल कोरिलेशन. Heat of the body is less. You also know heat बढ़ जाएगा तो मेरा फैट डिसॉल्व हो जाएगा. If heat increases, my fat will dissolve. Yes or no? So the second problem is heat of the body has gone down. अग्नि बल कमजोर हो गया, जठराग्नि कमजोर हो गई. नाउ डू दिस एक्सपेरिमेंट. ये यहां पे नहीं कर सकते, सो डू इट एट योर ओन कन्वीनियंस. कभी करके आप देखो. होल्ड योर ब्रेथ, सांस लेके सांस रोक लो एंड डू नॉट मूव. मूव ना करें, शरीर को हिलाएं नहीं. डू इट फ्यू टाइम्स, कुछ समय करें. यूल सी यूल स्टार्ट स्वेटिंग. शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी. Those people who are doing कुंभक, they know it. सिंपल, कितना आसानी से अचीव कर लिया हमने. हीट ऑफ द बॉडी बढ़ा दिया. यू डिडंट इवन डू एनी एक्सरसाइज, जस्ट सिटिंग विदाउट इवन मूवमेंट you can increase the heat of the body. So the moment you start doing kumbhak, the agni bala or the heat factor, the strength of heat factor of your body will increase, and thereby you'll see a loss of weight in your body. Excessive weight निकल जाए, ठीक है ना? And what else? You'll see high energy. जो अभी आलस आता है ना, you feel lethargic, that will go away. So you'll be able to do lot of activities because you would rather want to do lot of activities. दूसरा पक्ष रखा मैंने, ठीक है? Now तीसरा पक्ष रख रहा हूं, third part. If you are fat, take two people of the same age, one fat, one not that, not fat. आप एक काम करें, दोनों को सामने खड़ा करके रखें और धक्का दें दोनों को. पुश विद द सेम स्ट्रेंथ, बोथ पीपल, दोनों को धक्का दें.
Who will get into imbalance more? The fat person will get into imbalance more. वो अपने आप को संभाल नहीं पाए. A fat person will not be able to balance himself or herself that fast or with that efficiency. So what have you lost? अभी बताया, कुछ और स्ट्रेंथ बोला था, दोष बल, balancing strength. Dosha bala is balancing strength. Now this is also your immunity. The leverage you take with this body, how fast you get into a problem. आपने देखा होगा ना, have you seen those street children, red light पे बच्चे जो भीख मांगते हैं, those kids, they bear all the season without getting into disease. Yes or no? और हमारे बच्चों को पानी, बारिश होगी थी, नहीं बारिश में मत जाना, you'll catch cold, and they also catch cold very easily. What is weak in them? दोष बल. इम्यूनिटी कम है ना, इसी को आप इम्यूनिटी बोलते हैं. आई एम टॉकिंग इन मोर लेजिटिमेट टर्म्स, जिसको आप समझ सकते हैं. You can understand it much better. If you can't get into balance physically, will your body get into balance through some disease? It will lose that balance, creating strength. Dosha bala. The whole Ayurveda is based on dosha bala. Vata, pitta, kapha, dosha. अगर इसका बैलेंसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप डिजीज से बचेंगे. दिस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. दोष बल इज इम्यूनिटी. सो क्या डाउन हो गया? इम्यूनिटी डाउन हो गया. आप बैलेंस कैसे करते हैं अपने आप को? सोल्यूशन, हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? करके देखें. किसी को बोले धक्का दो मुझे, पुश मी एंड सी बिहाइंड. हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ? By holding your breath. करके देखो. सांस रोक के आप अपने आप को बैलेंस करते हैं. जब आपको चक्कर आते हैं तो आप सांस रोक के बैलेंस. When you feel dizzy, you hold your breath and try to balance yourself. दोबारा से, how your immunity will increase, how your dosha bala will increase, how you can ensure that you do not get into difficulty, disease and difficulties very easily. Increase those dosha bala. How can you increase your dosha bala? By increasing the capacity of breath hold. कुंभक से कर सकते हैं और किसी चीज से नहीं कर सकते. Now, apart from that, अभी एक और मैंने बोला था, देह बल, बॉडी का स्ट्रेंथ. You know, the moment the body becomes a little bloated, fat increases, the strength of the body also decreases. This is a common fact and experience of people who get into more fat, जिनके साथ में fat issues. You can also experience it through by clutching something. किसी चीज को आप पकड़े, clutch करें. You'll see a fat person will be able to clutch it lesser than a lean person. तो आपका देह बल, शरीर का strength. That is why things become a little. You try to avoid any kind of work which requires a little push from the body. Exercise आपके लिए hell है. और एक्सरसाइज बना आपको करवाया जाए तो आपको आराम क्या मिलेगा? आपकी लाइफ खराब होगी. बिकॉज यू नॉट एक्सपीरियंस इट इन अ गुड वे. आपको तो टॉर्चरस लगेगा ना. इफ योर देह बल इज लेस, एक्सरसाइजिंग विल बी टॉर्चरस. एंड दैट इज व्हाई इफ यू टॉर्चर योर बॉडी, डू यू थिंक यू कैन increase your health and increase the quality of your life? क्या कैसी बातें कर रहे हैं? Heavy exercise is not a solution, rather it is a problem. Unless and until you increase your deha bala,
Exercising is not an option. The second thing is dieting again. Dieting. If your metabolic strength is good, you can actually go through dieting very easily and without any trouble. But if your metabolic strength is not that good, dieting will create weakness. बहुत weakness, आप तो आपकी लाइफ में weakness आ जाएगी. It is not about fat, but you will not be able to enjoy it. Just see people who diet. उनका चेहरा कैसा लगता है आपको? Dried up, no life, dull, खिलखिलाता चेहरा नहीं लगता. At least fat people have that glowing face. मगर एक डाइट किए हुए बंदे का तो पूरा निचड़ा हुआ चेहरा होता. Your metabolism is weak and your body will have to do excessive work. बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. उसका बल तो है नहीं, मगर उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा to dissolve the fat. अगर किसी कमजोर पांव से आप ज्यादा काम करवा लें तो पांव में कमजोरी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? Not excessive work. उससे एक्सेसिव वर्क नहीं करा सकते, लेजिटिमेट वर्क करवा सकते. So dieting becomes a burden, and you know what experience you get into. आपके शरीर का एक्सपीरियंस क्या है डाइटिंग करने में? So unless until you increase the metabolic strength of your body, dieting is not conducive. Rather, it will create problem. Second, इसके अलावा, apart from that, if you take any fat cutter or statin ले लिया आपने, fat cutter ले लिया, फिर क्या होगा? What will happen? So let me explore the fifth step. पांचवा step बता रहा हूं. If your body gets into risk, not just because of the weakness of internal strength, but because of the environmental and social ecosystem, अगर उसकी वजह से आपके शरीर में रिस्क आता है, now what will happen? The moment body gets into risk, the body starts mitigating that risk. जब भी आपका शरीर के लाइफ को रिस्क होता है ना, तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो जो मिटिगेशन है ना, रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, वो चालू कर दे. Now, when risk increases, the first thing that increases is inflammation in the body. आपके शरीर में inflammation होगा. So I'm giving you a simple example. If you get into a bruise, आपके स्किन पे एक bruise, एक खरोच लग गई. If you put a little fat, घी लगा लो, put ghee on that. The burning sensation gets down, isn't it? It comes down. वो जलन है वो एकदम से डाउन आ जाता है. Yes or no? The moment you put a chemical in the body, who takes the toll first? Chemical bomb जब आप डालते हैं अपने अंदर, medicine, I call them chemical bomb. जब आप डालते हैं, तो what is the first organ that gets impacted? Your liver. Liver में inflammation शुरू हो जाए. Liver starts getting into inflammation. How will the liver protect itself with that inflammation? उस inflammation से कैसे अपने आप को protect करेगा liver? आपने तो फैट लगा लिया ना, लिवर भी फैट लगाएगा ना. Will the liver not increase fat? Fatty liver. What is fatty liver? Protective mechanism. If your body gets into inflammation, will it not increase cholesterol and triglyceride? What is increase of cholesterol and triglyceride? Protective mechanism of your body. बचा रहा है आपका शरीर. Do you know cortisol, which is anti-stress hormone? It gets manufactured through your cholesterol. Cholesterol से बनता है वो. If your body gets into risk, will it not increase cortisol?
अपने आप को बचाने के लिए एंटी स्ट्रेस हार्मोन नहीं बढ़ाएगा क्या? बढ़ाएगा ना, it will increase. But you take a statin to decrease that cholesterol and triglyceride and fat cutters. Are you increasing the risk of the body or are you helping your body? जो अपने आप को बचाने के लिए आपका शरीर काम कर रहा है उसी को खत्म कर दो. आपकी सेना आपको बचाती है, सेना को मार दो. आर यू डूइंग गुड और बैड? एंड देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस. स्टैटिन खाएंगे तो डायबिटीज हो जाती है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आता है. 25% ऑफ न्यू डायबिटिक केसेस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्टैटिन. अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ऐसे स्टैटिन खाते हैं. आपका फैट कम करने के लिए आपको डॉक्टर पकड़ा देगा स्टैटिन और आप बीमार होते जाओगे. क्योंकि आप अपने बॉडी को बचाने ही नहीं दे रहे अपने आप को. You are treating your body as a criminal. Since what this has happened? कब से आप अपने शरीर को क्रिमिनल ट्रीट करने लग गए? In the last 50 to 100 years. ये मेडिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है. So is that good? I was more than 100 kgs. 100 किलो से ज्यादा था मैं. घी खा के अपना वेट कम कर लिया. एवरी डे आई कंज्यूम घी. घी खाने से वेट बढ़ता है क्या? Come on, example. I'm example in front of you. And there is not one example. Now there are many examples. हमारे प्रोग्राम में हजारों लोग हैं और सैकड़ों लोगों ने अपना घी खा के अपना वेट कम कर दिया. Because ghee reduces the risk factor of your body. कैसे खाना है, क्या करना है, वो तो हम प्रोग्राम में बताते हैं. So there will be process, Ameda process, इसको हम Ameda process कह रहे हैं, which we will teach you. The total program is of 9 weeks, but it has 3 stages. Stage 1, stage 2, stage 3. Every stage is of 3 weeks. 3 हफ्ते की हर एक स्टेज है. So if you come to stage 1, so you will learn Ameda 1 method, which will address all these things what I have explored. अभी तक जो भी बात किया ना मैं, whatever I talked about, it's a simple method which will strengthen all these aspects. Ameda 1, Ameda 2, Ameda 3. You can enroll for all these 3 stages at the same time also. For that you will get added discount, but you can also test and try the first stage, which will be basic in nature. Third stage में ही हम customization करेंगे. We will do customization in the third stage. What customization? So tell me, everyone must have lost one strength more than the other strength. Yes or no? आपके शरीर का आपने strength खोया, तो कोई एक strength ज्यादा खोया होगा ना दूसरे के मुकाबले. So everybody has got into high fat state by or for different root cause, because of different root cause. हर एक का reason अलग है. Some people have fat with acidity in the body. Some people have fat with higher cholesterol. Some people have fat with diabetes. Some people have fat with thyroid issue. सबके लिए अलग अलग है ना, अलग अलग प्रॉब्लम. यू हैव डिफरेंट प्रॉब्लम, सेम इंक्रीज फैट लेवल्स बट डिफरेंट रूट कॉज. जड़ अलग है सब में. सो अनलेस एंड अंटिल यू फाइंड दैट रूट कॉज, योर थेरेपी इज नॉट
कंप्लीट, पूरा नहीं है आपका पेट. But we will do diagnosis only in the third stage. So the first stage is Ameda 1. A simple method you can do, test and try. इसके लिए आपको वो डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है. नो डाइटिंग, नो एक्सरसाइज, नो केमिकल मेडिकेशन, कोई केमिकल मेडिसिन नहीं है. वी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी और एन option to you. You can also take a little support of some very specialized combinations, herbal combinations. वो भी आपको ऑप्शन देंगे, बट दैट इज एन ऑप्शन ओनली. आपको आपकी शक्तियां कोई भी दवाई नहीं बढ़ाती हैं, ये आपको समझना पड़े. सो दैट इज अ सपोर्ट, नॉट अ थेरेपी, नॉट अ सोल्यूशन. सोल्यूशन नहीं है वो, इट्स अ लिटिल सपोर्ट. You want to do it a little faster, take a little support of certain combination of herbs, very specialized, and it comes through a certain lineage. तो वो market में नहीं मिलता. And we have association with many yogic lineages and spiritual lineages and other siddha lineages, जिनके through वो आता है. Okay, you can take a little support of that, but that is optional. वो side में रखें. This is treatment. This is the thing. Ameda 1, Ameda 2. Ameda 2 will be a little more than Ameda 1. थोड़ा ऐसे मान के चलिए, a little more advanced than Ameda 1. Second stage आ गया वो. And Ameda 3, where we will also do a customization by doing diagnosis upon you. आपको फॉर्म भरवाएंगे and we'll get to know, एक simple Google form, and we'll get to know what strength you have lost. So we will customize the whole Ameda 3 according to your diagnosis. So what it will also address is your disease, because now we are getting to the root cause. Your disease is also owing to or an outcome of that lack of strength. So if we increase that strength, your disease, you will see relief in your specific disease also, like blood pressure, heart disease, diabetes, thyroid issue, and other different kinds of disease. In general, it will also increase your immunity factor. It will also ensure that you do not get into problems later on in your life also. If you just get this lifestyle unto you, अगर आप इसे अपना लेते हैं, तो आप कि आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी. So you will also be protected from crashes and other disease which might happen later on in your life. तो ये 3 स्टेप में ये प्रोग्राम करेंगे. You can choose one by one also, or you can enroll for the whole 9 weeks also, है ना. उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. So it is up to you to make up your mind. Now, there will also be a little diet perspective and lifestyle perspective. जिस तरीके से मैंने ये बताया आपको, you will not get in Google all these information. आपको Google में नहीं मिलने वाला, because we are not exploring life in other ways. So similarly, you will get lot of information about food and about lifestyle. So food will not be diet plan. Diet plan काम नहीं करता साहब. भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी. डाइट प्लान काम नहीं करता. Will tell you how to use food so that it supports your strength of the system. तो वो भी केवल आपके इंटरनल फैक्टर्स को एड्रेस करेगा जो आपका वीक हो. So how to use food for that and how to use your lifestyle towards that. एक और चीज, once you lose fat and keep on doing kumbhak, you cannot gain weight unless and until there is some organ damage which you have got into because of long deterioration in the body. शरीर में तो बहुत समय से डिटोरेशन चल रहा है ना, और उस पे से दवाइयां खा रहे हैं. So you might get into an organ damage, and that time your body will try to protect itself by increasing the fat.
पर वो गलत नहीं है. You improve the organ, you improve that function, and your body will come out of the fat issue. तो पहली बात ये कि this is important for you to do, because what have you lost? You have lost certain strengths of your body. You must gain it to say it an actual treatment. ये वापस नहीं आएगा. In most of the case, it will not come back. So I had weight issues approximately, you can say 15 years back. 15 साल से तो वेट का इशू अभी तक आया नहीं है और अभी आएगा भी नहीं. I know this for sure. And my age is around 50. तो एक और proof, you will also, this also will do anti-aging for you. आपके लिए ये anti-aging भी करेगा. 3 years of kumbhak can make you 10 years young. Biologically I'm talking about. Your biological age will come down. आप टेस्ट करा के देख सकते. So this is about a little exploration about Ameda. In 3 steps we are doing this program. Ameda 1, Ameda 2, Ameda 3. 3 weeks program. Ameda 3 is the most advanced where we will do the diagnosis also. So 9 week hai. You can enroll for the whole 9 week or you can enroll for 3 weeks. That is up to you. एक चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं in the end, to end this my exposition of Ameda. See, we have used chemical on our land to get more produce. हमने अपनी जमीन पे खाद, पेस्टिसाइड यूज किया उससे ज्यादा पैदावार लेने के लिए. एंड वी हैव मेड आवर लैंड बैरन. और हमने अपनी जमीन खराब कर दी. अब वो 60 इयर्स तक केवल ये जमीन की उर्वरता बची हुई है. उसके बाद ये बिल्कुल बैरन हो जाए. अनलेस अंटिल वी स्टार्ट डूइंग समथिंग, डू समथिंग अबाउट दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So now every government is pushing organic farming, जैविक खेती. ये जमीन आपका जब से पैदा हुए तब से इस पे केमिकल बॉम्ब्स डाले गए. And you have lost the strength of your body, the fertility of your body, the fertile strength of your body. You have lost the strength of coming out of disease. You have lost the strength of immunity. You have lost the strength of organ function. इसकी जैविक खेती कब करनी है? When do you want to start the organic farming of your body? इसकी जरूरत तो शायद आपको सबसे पहले है ना. So your body is crying helplessly and indicating in every which way that I am suffering. Please help your body. अपने शरीर की मदद करें. अपने शरीर की मदद आप दवाई खा के नहीं कर सकते. You can't do it by taking in chemicals. Taking good food is okay, but what will you do of genetically modified food? What will you do of the polluted environment? What will you do of that? Improving or eating good food is okay. कीजिए. Use your body a lot. Do exercises or whatever else you can do. But body के strength, internal strength को तो आपको कुंभक से बढ़ाना पड़े. This is the body's own mechanism to improve the strength of your system. ये compulsory कर लीजिए. Whatever else you do is okay. But this is what your body is crying for. उसकी थोड़ी मदद कर दीजिए. And you'll see your life will transform. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now we will be sharing the program details.
So I would like to request Anilji to please share the program details. After that, Swamiji himself will be joining us live to take up your question and answer. Over to Anilji. Yes, just give me 2 seconds. Are you able to see my screen, Rachnaji? Yes, yes, yes. Okay. So let's know about the program details. Most of you must be waiting for it. It's a guided program conducted online on Zoom app, and our mentors will be assisting you in the program. This is not something that you'll just be given a video. It has to be done under expert guidance. So that's made sure through the expert mentors that we got. Like Swamiji said that Ameda 1, Ameda 2, Ameda 3. Just so you remember, and since we've got ladies here, most of you, so we put in some silver, some gold, and some platinum into the plans. So Ameda 1 is actually silver, and this is a 21 days program, 3 weeks, gold, and then we have platinum. This is the advanced version, and this will contain silver and gold as well. Gold will contain silver plus additional kriyas and movements. Platinum will contain silver plus gold and customization or the diagnosis. Program will be 3 to 9 weeks depending on the level that you choose. Like silver is 3 weeks, gold is 6, and then platinum or Ameda 3 is 9 weeks. There will be 2 live classes every week, out of which one will be a learning class or the main class, and one would be the mentors class or the practice class. In the practice class, you have to keep your cameras on because our mentors need to watch you doing the kriyas so that they can guide you and correct you if you're not doing the correctly. All the classes will be recorded and you will get access to all the videos through a course dashboard. You'll get a login ID and password. So even if you miss any class, there's nothing to worry about because you can access the recordings and there'll be written instructions which you can download and take a printout. Next step, you pay the program fee and then you provide your details so that we can create course access for you, login ID and password, and then you join the program, start with silver. Everybody starts with silver, then they go to gold, unless somebody is just enrolling in silver, they'll complete silver. But somebody who's taking a platinum, they'll complete silver first, then gold, and then platinum. Total classes, I've already told you, I'll tell you again, silver will have 6 classes, 3 learning, 3 mentoring, 21 days. Same goes for gold and platinum. Platinum has 18 classes, gold has 12 classes. Platinum has the diagnosis also, like Swamiji just told you. What is the class start date? 9:30 a.m. on 17th April. That is a Sunday. Main classes will be on every Sunday 9:30 p.m. and the practice class will be on Tuesday at 7 p.m. And we'll share all these details in the chat as well as in the WhatsApp group also. What is the class experience like? These are live sessions and mentors watch all the participants. Like a lot of people ask that how is it possible on Zoom and online, because we've been used to face-to-face interaction, but we've specialized in providing this therapy because we've got other programs also. Swamiji conducts plans for diabetes reversal, heart and BP problem reversal, cancer reversal programs. All are done on online only. So we know how to conduct these therapies and these sessions online so that each and every participants, they get to understand very clearly. Then there'll be written instructions already told me in English and as well as in Hindi also. Then you'll get session recording, which is already said. Apart from this, you'll get a lot of things. Swamiji shares a lot of mental practices, unique diet perspective. Like he's already told you, these are not diet plans. How to use food so that it supports your system, internal system. Then simple detox processes will be there, and there's a lot of knowledge that he'll be sharing apart from the main kriyas. Before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. किसके लिए नहीं है? This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only.
See, things take time. The fat or the weight that you put on, it didn't come in a day. It has been there. It's been depositing since a long time. So it will take time to get rid of this. So this is not for those who are not ready to work on their body. Like Rachnaji already said that everything will require work, but yes, this won't require strenuous exercises or diet plans, nothing, but still you need to put in some effort. And it's not for those who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. We get to meet people who are really overweight, and when we tell them that you need to put in some minutes, they said, oh, we can't put in this, we're so busy. See, it's a matter of priority. If something is of priority, you'll find time. If it is not, you won't find any time. And then this is not for those who are impatient. You'll need patience for this. And it's not for those who are looking for free treatment, because this is a paid program. And this is not for people who are looking for tips. You do not get permanent solution through tips, by watching various YouTube videos and all, because you already must have done all that. So this is a therapy. This is a permanent solution that we are offering. There's a very special webinar pricing. Let's get to know what these are. The silver or the Ameda one, 3 weeks program, 6 classes. It's Indian rupees 1950. Then gold INR 3500, and the platinum 6500, which includes the diagnosis also, and it's the most advanced plan that we have. How to enroll? You pay the program fee. We'll share the links in the WhatsApp group as well as in chat. Then you post the payment receipt in the WhatsApp group, and Neha from our team, she'll be sending you, as soon as she sees the receipt, she'll send you the participant onboarding form on your personal chat, and then you submit your details to access the course dashboard. And then the first step would be to start attending classes. These are the payment details. We'll share it in a short while at both the places, in the chat as well as in the WhatsApp group. Now, this I'd like to discuss a bit with all of you about our support team. See, howsoever good a program may be, but if there's no support, it's not of much use. And since it's an online program, so we need to make sure that every participant is taken care of. Every participant is hand-holded and told things in a step-by-step manner. That's why we have a big team of 9 people. Rachna Shrimal Bothra, she's the program director. She's the host of this webinar also. Shalini Bhagwat, she's in charge of all the batches. And Atul Sharma, senior mentor. Pooja, another mentor. Ranjana Swain, another mentor. We've got Rakhi Chabra, another mentor we have. Then Neha Upadhyay, she's in charge of enrollments, and you'll be interacting with her initially to enroll. Anil Chauhan, that's me. If you've got any question, you can type in WhatsApp group and I'll be answering those questions. Himanshu Reddy, he takes care of all the technical stuff, the login IDs, the course dashboard. If your video is not playing, he's the person to go to. So we have a proper team, because this team will help you with the program delivery, will help you with all the issues that you may have. So there's nothing to worry about. And I'll stop here. Rachnaji will take the FAQs during the question answer session with Swamiji. Namaskar. Thank you so much for listening to the program details patiently, and thank you to Anilji for sharing the details. I would like to now invite Nayana ma'am, who has gone through the Ameda program and the changes she has felt. She would share in her own words. Over to Nayana ma'am. Nayana ma'am, can you hear me? Oh, 1 minute, I'll just put her on spotlight. Namaskar. Yes, Nayana. Namaskar. Yes, ma'am.
Namaskar, I am Naina Shriram Binte from Kalyan. I have joined the Ameda course in this March, and um, I was doing Ashtanga Chikitsa right before, this 20th December, and I've joined the Ameda in this 20th March. I wanted to lose my weight actually. My stomach is a little bulgy. So I was a little worried. But when I went through this course, I found that it's not the stomach bulging, it's the organs which have to be very vital. They have the very vital functioning. So I have it's been working. I've been doing this practice very diligently and religiously too. And I've learned that it's not about the fats, but it is about the organs of the body which have to be developed properly. And since I've joined, my हेलो, life has आप changed. ज्वाइन I कर सकते हैं, ये टेस्टिमोनियल बोल रही हैं, इसके बाद आप My life has been changed. I used to never like to do my household chores also, but now I'm enjoying it. And the main thing is that I was not liking to have, I didn't have a very good appetite before this. I was going through a lot of problems before 2 years. I had a nauseatic vomiting problem, and and this has really stopped. The life has begun from me. What I was 2 years back, it has just risen now again. I can climb down steps without holding the staircase, at least the side of the steps staircase. Now I'm very confident. I left my job due to my health problem, but doing this practice very diligently, and I've built up a little confidence, and I've become compassionate to people who are negative feelings nowadays. I don't know how it has changed me, because first I used to think, Are, these negative people are very, they shed out negatives and then they ruin our lives also. But now I'm turning compassionate. I think about them. There will be something in their life that they have turned negative. So I'm working towards it. And to say that my family has found a little change in me. Like I have little anger or something, but now I it's reduced a little, and I know I'm where I go wrong and things. And there's actually I do the art of living Sudarshan Kriya, and I feel that one guru has sent me another guru itself to bring a little more changes in my life so I can lead a very good life and a peaceful life. More than that, a healthy life and nothing else. Money comes and goes, but the health is real wealth. I feel that. And with this, I conclude my uh, experience. Thank you. thank you so much, Nayana ma'am, for joining us and sharing with our participants about your journey. Over to Swami Rajvibhu ji. I'm sure the participants are waiting with their questions. So I'll just put him on spotlight. Just a sec, give me 2 minutes. Okay. Namaste, Swamiji. Good evening. Okay, so the questions are, okay, Monica Tiwari ma'am says nowhere it's mentioned that what is Kumbhak program. Similar questions, so Sunaina ma'am also has. So what is Kumbhak program? Kumbhak is effort making mechanism of your body that we have been saying. Now, if you try to find out Kumbhak, usually the lineage of Kumbhak is almost like extinct in India. Only the mention of Kumbhak is there in Yog Kalachar, or in the field of yoga, you might hear it. That also in advanced level, in the initial level, it is actually barred. Nishedh hai Kumbhak shuruat mein. So Kumbhak is effort making ability of your body or effort making mechanism of your body. जब आप जोर लगाते हैं ना, वो जोर जिस तरीके से लगाते हैं, वो जो तरीका है उसको कुंभक कहते हैं. ठीक है, तो
There is not too much mention also of Kumbhak anywhere else. If you try to study it on the level of what you call as creating life, it is not there. On the level of coming out of life, that is yoga, there is a mention. But we need to revive this process, because we are basically losing is effort making ability of humanity. It has been coming down in the last 100 years. Our next question is, what is the difference between Kumbhak and Ameda? Ameda, Kumbhak, like for example, humans have different qualities, and you take up names. Actually, in India, there was a tradition where just according to your quality, somebody will name you. But now the tradition has gone, and we don't have people who can actually look at qualities, look at people in depth. We just see the surface of human being. So Kumbhak, again, if it is an effort making ability or mechanism, you can make effort in various ways. जोर लगाने का भी अलग अलग तरीका होता ना. There is an effort your body is making for digesting your food, isn't it? There is an effort which your heart is making for the lub-dub, for the pumping it is doing. Systolic and diastolic pumping that it is doing. There is an effort that your kidneys has to make to filter out blood. हर जगह पे अलग-अलग effort, isn't it? Similar to when you make something, create something, you put different kind of effort. When you break something, you put different kind of effort. So when we say Ameda Kumbhak, Meda means extra deposit. Meda means also lubrication of your life, but here Meda also means extra deposit or fearful state of being. So Ameda means coming out of that fearful state of being, and if you come out of that, you won't need extra deposit. अगर आपके घर में आपको डर लगता है कि पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप जमा कर लेंगे ना. लेकिन अगर आपका वो डर चला जाएगा तो आप जमा नहीं करेंगे. तो Ameda means in a perfect balance of what you call as availability of nutrition. Meda also means fat. Now direct correlation is not right. हाँ, जब आप संस्कृत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं सारी गड़बड़ी यहीं पे हो गई है. So Ameda means in a perfect state of nutrition, where your body is not in risk and your body's function is strong. ये अलग-अलग नहीं. I'm just Ameda Kumbhak, when I said, or when we are saying, it is a quality of Kumbhak, that type of Kumbhak. Okay, anybody else who wants to ask a question can please unmute themselves and ask their question. मुझे पूछना है क्वेश्चन. हाँ जी बोलिए. गुरुजी, लाइक मेरा हाइपरथायराइडिज्म है. मुझे ये फर्स्ट डिलीवरी के बाद हुआ है और फर्स्ट साइन मुझे था वेट लॉस, और लास्ट 6 ईयर से मैं वेट गेन करने की कोशिश कर रही हूँ. थायराइड की गोली तो रेगुलर लेने से जब भी टेस्ट करवाओ थायराइड तो नॉर्मली होता है, पर उसके बाद अभी हमने लास्ट ईयर से जितनी नॉलेज ऑब्टेन की है वो ये है कि हमने वेगन में कन्वर्ट होना चाहिए. हमने घी वगैरह का जो दूसरा रिप्लेसमेंट है वो प्लांट बेस्ड घी यूज बनाओ, बटर्स बनाओ, ताकि वो चीज फुलफिल्ड हो जाए. जैसे आप कह रहे थे कि हमारी बॉडी के अंदर घी से हीट कम हो जाती है, तो क्या वेगन होना भी एक नया चेंज है आजकल के अपडेट के हिसाब से होना? क्योंकि हमने कहीं सुना कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में पानी और घी डाल देते हैं तो पानी लंघने के लिए बहुत दिक्कत होती है. जैसे हमारा खून और फैट हम अगर डाल देते हैं शरीर में तो हमारा खून पास होने की दिक्कत काफी होती है.
अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया, आप सबके मैं आंसर दे देता हूँ आपके। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत तरीके से चीजों को देखा जा सकता है। जैसे कोई चीज बाहर काम करती है वैसे अंदर काम नहीं करती। आपके आइडिया पे कोई चीज काम नहीं करती है, इस बात का सबूत मैं आपको दे देता हूँ। पिछले 100 साल में प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं या कम हुई? इतने सारे एक्सपेरिमेंट, इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे हॉस्पिटल, इतने सारे आइडियाज, हमारी सिचुएशन खराब हुई है या अच्छी हुई? एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, पोस्टपार्टम डिजीज एंड डिफिकल्टी, डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम्स होना, ये बढ़ा है या कम हुआ? आपको शायद मालूम नहीं हो, ये बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, दूसरी रिलेटेबल चीज, थायराइड का इश्यू बढ़ा है या कम हो गया है? और ज्यादा लंबा जाने की भी जरूरत नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल की बात कर रहे हैं। सो थायराइड बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ गई है या कम हो गई है दुनिया में? डायबिटीज बढ़ गई। स्पेशलिस्ट डायबिटीज के बढ़ गए हैं कि कम हो गए? बहुत बढ़ गए। हर एक गली कूचे नुक्कड़ में आजकल तो यूट्यूब में सभी स्पेशलिस्ट हैं डायबिटीज के। मगर डायबिटीज बढ़ी है या कम हो गई? डायबिटीज बढ़ गई। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, एक्सरसाइज खूब कर रहे हैं लोग, डाइट प्लान कर रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं और बाकी डाइट कर रहे हैं, पता नहीं किस किस तरीके की डाइट कर रहे हैं, तो हार्ट अटैक कम हुआ है या बढ़ गया? हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में। 100 साल पहले हार्ट अटैक होता ही नहीं था। इनफैक्ट हार्ट डिजीज नहीं होता था, उससे हार्ट अटैक कभी नहीं होता। तो 100 साल के अंदर हमने हार्ट अटैक को नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ पे इतना कंपटीशन, इतना जोरदार इसको आगे बढ़ाया कि नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। कैंसर बढ़ गया, कम हो गया? 12% के रेट से हर साल बढ़ रहा है, एपिडेमिक हो जाएगा। कोई और डिजीज बता दीजिए, कोई और डिजीज बता दीजिए जो बढ़ा है, कम हुआ। तो मुझे एक बात बताइए, आप में से कार्बोहाइड्रेट कितने लोगों ने देखा है? सब तो कैमरा बंद करके बैठे होते हैं आप लोग। कैमरा खोलें तो हम आपस में इंटरेक्ट करें, अच्छा लगता है ना? जस्ट बी इन्वॉल्व एंड यू सी, यू विल एंजॉय, स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ। कार्बोहाइड्रेट कितने लोगों ने देखा है? किसी ने कार्बोहाइड्रेट देखा? मैं आपको ना कॉमन सेंस की बात, आप जो साइंस सोचते हैं ना, आप सोचते हैं साइंस सही है। साइंस सही होता तो हम हेल्दी होते, कहीं तो गलत होगा। साइंस एक्चुअली आप लोग इंडियंस हैं और इंडियंस वैसे ही समझदार हो। प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़े लिखे हो गए। वेस्टर्न लोगों ने साइंस तो हमसे ही चुराया हुआ है। चोरी चोरी क्या वो माल तो हजम होता नहीं ना। हमारे देश में कहावत है कि भाई चोरी करोगे ना तो हजम नहीं, कहीं से निकलेगा। तो उन्होंने हमसे साइंस चुराया, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। हवा बर्बाद कर दी, पानी बर्बाद कर दिया, जमीन बर्बाद कर दी, स्पेस बर्बाद कर दिया, इंसान का शरीर बर्बाद कर दिया। नहीं तो आप प्रूफ देख लो ना, पिछले 25 साल के डेटा उठा के देख लो, कितने लोग ज्यादा बीमार हुए, कितने लोग बीमार कम हुए। तो केवल भ्रांति है कि आप बीमार, आपकी बीमारी ठीक हो गई, एक्चुअली सब कुछ बढ़ गया। तो कार्बोहाइड्रेट किसने देखा? आप में से, आप में से किसी ने भी नहीं देखा। यू ट्राई टू कोरिलेट, समझने की कोशिश करते हो। वो चावल में थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम, ऐसा आप अंदाजा लगाते। अच्छा, आपके बॉडी ने कब बोला कि मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए? किसी दिन सुबह उठ के इसने बोला आई नीड 50 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बोला कभी आपके बॉडी में? नहीं, आपके बॉडी को मालूम नहीं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। दिस इज नॉट योर बॉडीज लैंग्वेज। सो योर बॉडी डजंट नो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, you don't know what is carbohydrate. Let's be sensible, what language are you speaking? आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मालूम, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मालूम, ये एलियन लैंग्वेज बोल के ऐसा लगता है कि हम इंटेलिजेंट हैं दूसरे को दिखाने के लिए। मगर आप तो अपने शरीर की भाषा ही नहीं बोल रहे। आप अपने शरीर की भाषा नहीं बोलोगे तो आप समझदार हो जाओगे या बेवकूफ हो जाएंगे? सभी बेवकूफ हो गए। हर एक जानवर को मालूम है ना उसका मेडिसिन क्या है।
हर एक एनिमल को मालूम है। आपका डॉग अगर पेट खराब होगा ना तो गार्डन में जाके स्निफ करेगा, घास सूंघेगा, कोई घास उसको स्मेल पसंद आएगी वो खा लेगा और ठीक हो जाएगा। एंड वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स आवर बॉडी। वी आर नॉट इवन स्पीकिंग आवर बॉडीज लैंग्वेज एंड वी थिंक विल बिकम हेल्दी। कौन से ड्रीम में जी रहे हैं हम लोग? हाँ, ये अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से करेंगे तो विल वी बी एवर बी एबल टू अचीव हेल्थ? नेवर, कभी नहीं। दूसरी बात ये कि व्हेन योर बॉडी इज इन रिस्क, जब आपको खरोंच लग जाती है ना, ये मैंने बताया है शायद इसमें, जब आपको खरोंच लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होता है, क्या करोगे आप जलन को कम करने के लिए? अगर नेचुरल सेंस, अगर गांव वाले से भी पूछोगे बोलेंगे घी लगा लो ठीक हो जाए। आप घी लगाओगे आपका जलन कम होगा। आपके बॉडी को जलन हो रहा है क्योंकि आप बचपन से बॉम्बार्ड कर रहे हो ना, केमिकल बॉम्बार्डिंग कर रहे हो अपनी बॉडी को। जमीन पे केमिकल बॉम्बार्डिंग किया ना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अभी क्या हुआ? द लैंड हैज बिकम बैरन। इनफर्टाइल हो रही है हमारी जमीन, आपको शायद मालूम नहीं, बट वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट। अब आप क्या कह रहे हैं? ऑल द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब दे आर सेइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, जैविक खेती करो। तो पहले तो जैविक खेती करते थे, वो तो 100 साल में ही हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। पहले तो हमारी ये प्रॉब्लम थी ही नहीं, ये तो पिछले 100 साल की प्रॉब्लम है। तो जब आप केमिकल बॉम्बिंग करते हो और आपके अंदर बॉडी का इन्फ्लेमेशन होता है, लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है, वो कैसे बचाएगा अपने आप को? आप तो शायद उसको मार दोगे, मगर वो तो जीना चाहता है, आपका बॉडी तो जीना चाहता है। आप शायद ना जीना चाहें, मगर इंसानी शरीर तो जीना ही चाहता है। तो वो भी फैट डिपॉजिट करेगा कि नहीं करेगा? जलन कम करने के लिए, लिवर का इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। फैटी लिवर हो रहा है फिर लोगों को, पर कह रहे हैं फैटी लिवर गलत है। अरे आपका लिवर बचाएगा कैसे अपने आप को, ये तो बताओ। आप उस पर तेल लगाओगे क्या? वो तो कंफर्ट मालूम है इसको कैसे अपने आप। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स आवर बॉडी हैज केप्ट इटसेल्फ अलाइव और नॉट। लाखों सालों से इंसानी शरीर ने अपने, इंसान के शरीर ने जिंदा रखा हुआ है ना। आज ही तो प्रॉब्लम आ रही है इन द लास्ट 50 to 100 years, अदरवाइज देयर वाज नो प्रॉब्लम इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्रिमिनल क्यों बना दिया इस बॉडी को? ये आता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, विच इज बेस्ड ऑन वाइट मैन्स बर्डन। उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनकी रिलीजन्स हैं, उसमें ये आता है कि दुनिया ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है, और उसी पे बेस्ड एलोपैथी। साइंस चुरा के हमसे ले गए, मगर भाई संस्कृति थोड़ी चली, संस्कार थोड़ी चले जाएंगे उनके। तो ह्यूमन बॉडी को क्रिमिनल क्यों बना? हर चीज में इसको मैनेज करके जेल टाइप में रखने की कोशिश कर। नहीं, ये शरीर जानता है देयर इज अ रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। आपका शरीर ठीक करता है, कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती। गेट इट वेरी क्लियर। आपको लगेगा कि शायद अभी ठीक कर दिया, मगर वो खराब कर देगा। हो सकता है पेन किलर आपको 2-3 घंटे रिलीफ दे दें, मगर वो आपके शरीर को नुकसान कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको कौन ठीक करता? आपका शरीर ठीक करता। शरीर में क्या है जो जिससे ठीक होता है? इट इज कॉल्ड एज रिकवरी स्ट्रेंथ। इसको अलग अलग नाम से आप जान सकते हैं, मगर अपने रिलेटेबल टर्म्स में हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ है। खरोंच लगा दो, एक बच्चे की खरोंच चोट है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, एक बूढ़े इंसान की चोट थोड़ा टाइम लगाती है ठीक। यानी क्या हुआ? रिकवरी स्ट्रेंथ कम हो गई। रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा दो, ये ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, किसी भी एज में ठीक हो जाएगा। आपका ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या आपका बॉडी रिकवर नहीं कर रहा होगा? उस ऑर्गन कर रहा होगा, मगर आप गोली खा खा के इसको रिकवर नहीं करने दे रहे।
अगर आप दवाई ना खाएं तो आपका शरीर ठीक कर लेगा डायबिटीज से, थायराइड की प्रॉब्लम से आपको, मगर बचपन से आपने इतनी बम्बार्डिंग की कि बेचारे का कंफ्यूजन हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया आपका शरीर। इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कितने लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? थायराइड की प्रॉब्लम है ना, अभी तक कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ समय बाद में ज्यादा परेशानी आ जाएगी, डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो कैसे ठीक करना है इसको? आपका बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ है। अमेदा कुंभक जब आप करते हैं तो उसके अंदर एक हम पार्ट है जिसमें कहते हैं सर्वांग कुंभक। सर्वांग हठ कुंभक हम आपको सिखाते हैं, सेकंड लेवल, गोल्ड लेवल पे हम आपको सिखाते हैं सर्वांग हठ कुंभक, विच विल रिजुवनेट एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, एंड देयर आर स्पेसिफिक मेथड्स टू एड्रेस एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स ठीक होंगे, वो उनका इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ठीक होगा ना, तो आपका शरीर फैट नहीं चाहेगा। जिस इंसान की लाइफ में रिस्क कम होता है ना, उसको फैट कभी नहीं आता। दो भाई का एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग जानते हो, कृष्ण बलराम, महाभारत का टाइम है, कृष्ण बलराम, ठीक है। बलराम इज हेवी बिल्ट, कृष्णा इज लीन बिल्ट। सेम ब्रदर हैं, साथ में पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। आप बोलोगे फिजिकलिटी वैसा था, नहीं नहीं, उनको जितना रिस्क था ना, उसकी वजह से उनकी फिजिकलिटी का गड़बड़ हो जाना चाहिए। द काइंड ऑफ रिस्क दे फेस इन देयर लाइफ, बट कृष्णा नेवर गॉट हिमसेल्फ इनटू रिस्क। अंदर से उनको कभी भी रिस्क नहीं रहा, दैट इज व्हाई ही वाज ऑलवेज लीन। बलराम वाज लाइक फ्लक्चुएटिंग, एक्सेसिव, कम थोड़ा जबरदस्ती किया एक्सरसाइज करके, फिर एक्सेसिव, फिर कम किया। नाउ दैट पर्सन हैड रिस्क इन हिज लाइफ, जबकि सारा काम तो कृष्ण करते हैं फिर भी बलराम ने रिस्क ले लिया। वैसे ही हम लोग हैं, द मोर रिस्क यू विल गेट इनटू, योर बॉडी विल ट्राई टू सर्वाइव। One of the easiest way for the body to survive is keep the stock ready or keep the stock on. फैट आपके भोजन का स्टॉक है, अगर आपको नहीं मिला, मगर आजकल देखिए ना, हमारे को भोजन की कमी नहीं है, लोग ज्यादा खा के मर रहे हैं, कमी नहीं है किसी को भी, बट somehow in our mind we are not settled because the body का फंक्शनिंग जो है वो सेटल नहीं है। आप जो सोच रहे हैं वो सेटल नहीं है, संतुष्टि नहीं मिलती किसी चीज को करने में। यू हैव ऑल द नॉलेज। आज मेरे ख्याल से 50 साल पहले जिस इंसान को आपको जितना मालूम है, उस इंसान से ऑलमोस्ट लाइक 1000% मोर। एंड आई एम सेइंग लेस, मैं एक बहुत ही लीन फिगर ले रहा हूं, 1000% आपको ज्यादा चीजें मालूम है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। उसी से रिस्क है, क्योंकि अभी बोल रहे थे ना कि हमने ये पढ़ा है, ये डाइट, वो डाइट, वो डाइट, वो डाइट, वो डाइट, किसी ने भी बॉडी का नहीं सुना। एवरीबडी इज मेकिंग आइडियाज ऑन देयर ओन। पानी और घी को मिला लो तो वो खून एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये आप ग्लास बीकर में कर रहे हो क्या? बॉडी बिहेव्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट मैनर। आपका ब्रेन पूरा का पूरा घी है, कोलेस्ट्रॉल है, 80% कोलेस्ट्रॉल है आपका ब्रेन। आपके दादी मां से पूछो, कहते थे बच्चों को घी खिलाओ दिमाग बढ़ेगा। याद है? नहीं याद है? नहीं याद है तो आप देख लीजिए, बच्चों को घी खिलाओ दिमाग बढ़ेगा, गाय का घी खिलाओ दिमाग बढ़ेगा, भैंस का घी खिलाओ शरीर बड़ा हो जाएगा। They were more sensitive towards how this body functions, how this life functions. क्या आपको मालूम है there is nothing called as blood pressure? ब्लड का कोई प्रेशर ही नहीं हो सकता, क्या आपको मालूम है इस बात का? Now I am talking about cutting edge research, modern research. ये आपके पास अभी खबर नहीं पहुंची है, बस इतनी सी बात है। अगले 5 से 10 साल में पहुंच जाएगी। अभी वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि 100 साल से ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, अब क्या बोले? सडनली दे आर रॉन्ग। So laminar flow of blood doesn't create a vertical pressure. Physics का लॉ है, फिजिक्स का सिंपल सा लॉ है फ्लूइड डायनामिक्स में, laminar flow of fluid doesn't exert a vertical pressure or vertical pressure of blood। और ये भी नहीं सोच रहे कि जब आप पट्टा बांधते हैं तो आप ब्लड दबाते हैं या मसल दबाते हैं, आप तो टिश्यू प्रेशर मेजर कर रहे हैं।
दैट इज कॉल्ड एज व्यान। हजारों सालों से हमने इसको एक नाम रखा है, व्यान। सो देर इज लॉट टू बी एक्सप्लोर्ड। आपको अगर लगता है कि साइंस बहुत समझदार हो गया, तो साइंस कंफ्यूज जरूर हो गया। पहले डायबिटीज मालूम था लोगों को क्या होता, आजकल मालूम ही नहीं कि क्या होता है। हाँ, मैं बताऊं आपको, मैं 50 चीजें बता सकता हूं। पहली बात तो ब्लड में शुगर डायबिटीज नहीं होता। वो तो प्रेग्नेंट लेडी को भी ब्लड में शुगर आया होता है, किसको डायबिटीज है? नहीं, वो डायबिटीज नहीं। पैनक्रियास खराब होने से हो सकता है एक रीजन, लिवर से हो सकता है, पैनक्रियास से हो सकता है, इंसुलिन अमाइलिन से हो सकता है। अमाइलिन का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो लैब में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इंसुलिन के साथ साथ अमाइलिन निकलता है 1%। 99% इंसुलिन, 1% अमाइलिन का सपोर्ट चाहिए उसको। अमाइलिन की तो बात ही नहीं कर रहे। पिट्यूटरी फंक्शन गड़बड़ होने से डायबिटीज, वो शुगर या फिर मेटाबॉलिक इश्यू हो सकता है। पिट्यूटरी फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिविटी जिसे कहते हैं एड्रिनल फटीग, उसकी वजह से ब्लड में शुगर ज्यादा दिख सकता है आपको। लेप्टिन मिस सिग्नलिंग होगा आपके बॉडी में तो ब्लड में शुगर दिख सकता है। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज का प्रॉब्लम होगा तो आपकी बॉडी में, मैं आपको 50 चीजें बता सकता हूँ। नोबडी नोज व्हाट इज डायबिटीज। Everybody is trying to put down their blood sugar level and they are getting into multiple problem. क्या आपको मालूम है कि कैंसर के जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से रिलैप्स होता है, उसकी वजह से वो मल्टीपल जगह पे हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न रिसर्च, ये शायद आपको मालूम नहीं। तो पहली बात तो व्हाट इज द प्रूफ दैट यू हैव डिफिकल्टी एंड डिजीज? नॉट योर टेस्ट, इट इज योर बॉडी। कम बैक टू बेसिक्स, कम बैक टू द बॉडी। आपका बॉडी को मालूम है ना कि प्रॉब्लम है, लेवल देख के प्रॉब्लम नहीं होता। योर बॉडी हैज टू शो सिम्टम, ओनली देन यू हैव अ प्रॉब्लम। तो कम बैक टू बेसिक्स। आज नहीं आओगे, 10 साल बाद आओगे, तब तक आप तो खराब हो चुके होगे। आपका बॉडी एक ऐसी स्टेट तक पहुंच चुका होगा जहां वो रिकवर नहीं हो सकता। आज इस पे काम करने की जरूरत है। व्हाट इज द रिकवरी स्ट्रेंथ? हु रिकवर्स यू? देयर इज अ रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी विच रिकवर्स यू। क्या उसको बढ़ाना जरूरी नहीं है? उसको बढ़ाना सबसे कंपलसरी है। एंड दैट इज व्हाट यू विल सी एंड एक्सपीरियंस व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग अमेदा कुंभ। अभी किसी ने बताया ना, नाउ आई डोंट नो दैट ये सब लाइव आके बताते हैं, मुझे मालूम भी नहीं है कि मतलब उनको ये फायदा हो, क्योंकि एवरीथिंग इज लुक्ड आफ्टर बाय मेंटर्स। उन्होंने बताया कि आई हैव बिकम कंपैशनेट, है ना, एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट आई नो हाउ इट हैपेंड। मुझे मालूम है कंपैशन नीड्स स्ट्रेंथ। सी, वीक पीपल कैन नॉट बी कंपैशनेट। कमजोर इंसान ना दिखावा करेगा कंपैशनेट होने का, कंपैशनेट नहीं होता। आपकी बॉडी सेंसिटिव कब होती है? जब वो स्ट्रांग होती है। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि अगर एक कवि की बड़ी अच्छी सी कविता थी कि गुस्सा उस सांप को शोभा देता है जिसके अंदर जहर है। अगर जहर नहीं है, वो गुस्सा दिखा रहा है, तो खोखला गुस्सा है। ठीक है ना? जिसके पास शक्ति होती है ना, शक्तिशाली, वो क्षमा कर सकता है। अगर वो वीक कोई क्षमा कर रहा है तो वो क्षमा नहीं होता। वैसे ही कंपैशनेट होने के लिए भाव में कंपैशन होने की जरूरत नहीं है। भाव आएगा नहीं, दिखावा कर सकते हैं आप। कंपैशन होने के लिए आपके अंदर बहुत सेटलमेंट और सेंसिटिविटी चाहिए। आप बहुत स्ट्रांग और सेंसिटिव होंगे तो कंपैशन इज समथिंग दैट विल नेचुरली फ्लो। यू डोंट इवन हैव टू लुक देयर। तो हमने पकड़ा गलत जगह पे है, करना क्या है वो गलत जगह पे पकड़ा। अगर करना क्या है सही पकड़ लें हम, तो विल गो टुवर्ड्स अगेन रिवाइविंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। और स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके अगर हम अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करते हैं, तो देयर विल बी मेनी थिंग्स दैट विल हैपन व्हिच यू कांट इवन थिंक ऑफ। आपका जीवन जो है वो अच्छे की तरफ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यू विल कम आउट ऑफ मेनी डिजीज एंड डिफिकल्टीज, नॉट जस्ट वन। फैट तो हमने एक बहाना चूज कर लिया कि उसकी वजह से आप आ जाओ।
फैट तो कम होगा, but you will also come out of many other diseases and difficulties that you have taken up in your life, है ना. वो कैसे करेंगे? आपके रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा के करेंगे. और कहां से बढ़ाएंगे? कोई दवाई खा के बढ़ाएंगे? दवाई आपके रिकवरी स्ट्रेंथ को कमजोर कर. अच्छा ठीक है, आयुर्वेद वाली दवाई ले लेते हैं. आयुर्वेद वाली दवाई आप लेते हो, पर काम तो आपका शरीर ही करता है ना उसके ऊपर. इफ योर बॉडी हैज लॉस्ट स्ट्रेंथ, कितना भी कैल्शियम खाओगे, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा ना आपके शरीर में. So it is not calcium deficiency, it is your inability or the inability of the body to absorb calcium, where you have to do something about it. उसको ठीक करना पड़ेगा. कैल्शियम खा के किसी का भी ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ. गिव मी वन एग्जांपल इन द वर्ल्ड. दुनिया में एक एग्जांपल दिखा दो. डायबिटीज खा के की गोली खा के ठीक हो गई, एक एग्जांपल दिखा दो. थायराइड की गोली खा के थायराइड ठीक हो गया, एक एग्जांपल दिखा दो. ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर की गोली खा के फिर जरूरत नहीं पड़ी उस गोली की. एक एग्जांपल दिखा दो ना. इवन वन सक्सेस तो होना चाहिए ना. वन सक्सेस स्टोरी. हम आपको बहुत सारे सक्सेस स्टोरी दिखा देंगे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इट इज नॉट बीइंग अगेंस्ट समथिंग, इट इज टुवर्ड्स समथिंग व्हिच वर्क्स. एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट डजंट वर्क, एंड इट इज योर लाइफ, सो यू मस्ट नो. और कोई सवाल है? Gitu Vig ma'am, please unmute yourself to ask your question. Mishti Taneja ma'am writes, what does body need? What does body need? That is what we have been talking about. Your body needs support. Uske function, various functions have come down. It wants support from your side, that you build up those strengths. You don't bombard your body with chemicals. Don't put anything inside your body which is not your food. So genetically modified food is taken as some threat by your liver. जो आप भोजन खा रहे हैं, it is genetically modified. So when you come to the class, we'll tell you even as simple as how to create a food which is conducive to your body, like how much water should be there. These are general things that we should know. But the first and foremost is you increase the strength factors or health factors of your body. And that is inside, and it can be touched with Kumbhak only. So Ameda Kumbhak is what you should do. The second thing, how to create a lifestyle of health, and we'll talk about it in the classes towards the later side of the course. A lot of other things we can't explore everything here. पर आपको एक overall view मैंने दिया कि whatever you are doing, you are actually weakening various aspects of it. So we'll not say to stop it immediately. एक ड्रग एडिक्ट से ड्रग आप छीन लेंगे ना, तो वो तो बेचारा तड़प जाएगा ना. तो आप सोचते हैं ड्रग एडिक्ट वो पड़ोसी का लड़का है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. आप अपने घर में देख लीजिए कितनी दवाइयां पड़ी हैं. यू आर अ ड्रग एडिक्ट. लेट मी टेल यू क्लियरली, आप लोग ड्रग एडिक्ट हो. आपसे आपका ड्रग अगर हम छीन लेंगे ना, तो आप तड़पने लग जाओगे, है ना. एक बेवड़े से अगर उसकी दारू छीन लेते हैं, तो वो तो बेचारा परे जो कहेगा ये तो दुश्मन है मेरा. तो अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे. अभी हम क्या कहेंगे कि आप इतनी शक्ति बना लो अपने अंदर, अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि आपको खुश होने के लिए उस अल्कोहल की जरूरत नहीं, उस दवाई की जरूरत नहीं. हेल्दी होने के लिए आप हेल्थ इतना क्रिएट कर लो कि वो आपको मैनेज करने के लिए एक गोली की जरूरत ना पड़े. फिर आपकी गोली तो अपने आप छूट जाएगी. द मोमेंट योर हेल्थ इंप्रूव्स, यू विल नॉट नीड ऑल दो सपोर्ट ना. So this is what we are trying to do. हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप दवाई अपना बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो नहीं. हम क्या कहेंगे, you do this, spend some time, do this. आधा घंटा 40 मिनट अपना निकालिए और ये कीजिए, and you'll see how your life will change. And then at certain point of time, you will come to the right balance of everything. वेट तो आपका जाएगा ही, मगर अगर डाइट करके वेट कम करोगे ना, तो आपके बॉडी को नुकसान होता है.
क्योंकि वो वैसे ही वीक है ना. Why you are fat? Because your body is weak. अब डाइट करके तो उसको और वीक बना दो, एक्सरसाइज करके उस पर लोड और डाल दो. तो ये अच्छा तरीका नहीं है. यू कैन रिड्यूस वेट थ्रू दोज मेथड्स, बट दैट इज अ वेरी वेरी रिस्की मेथड. आगे चल के आपको डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर आ गया, हार्ट वीक हो गया, किडनी इशू आ गया या ऐसा कुछ हो गया, तो आप रिलेट भी नहीं कर पाओगे व्हाट यू हैव डन अर्लियर इज creating this problem. So strengthen your body, the weight will come down 100% guaranteed. जो कुंभक करेगा वो बढ़ने. मैं 100 किलो का हुआ करता था, 100 से ज्यादा. आई एम एन एग्जाम्पल. जो कुंभक करेगा उसका वेट नहीं बढ़ सकता. दिस इज द मोस्ट हेल्दी वे टू रिड्यूस वेट. यू विल मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड देन रिड्यूस वेट. वीक बना के रिड्यूस नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग करके रिड्यूस करेंगे वेट. And you will also come out of various other disease and difficulties. Sir, can you give us an idea of what kind of exercise we are going to do? Any one or two example? It's not exercise. It is not exercise. For example, I'll give you an example. Kumbhak is effort making mechanism. When you make sound, do you make effort? तो आप अंदर कुंभक कर रहे हैं actually. When you lift weight, you make effort. तो आप कुंभक कर रहे हैं. When you move your limbs, you make effort. तब आप कुंभक कर रहे हैं. When you listen, when you focus, when your body does metabolism, they all use kumbhak. Now, strength making or effort can be created by various ways, but for the present humankind, usually at a certain point of time, you'll see you will hold your breath to make the effort. तो सपोज करो हम क्या चीज करेंगे. हम करेंगे ऐसा कि आपके बॉडी को एक पोजीशन में लेके आ जाएंगे, एंड देन यू विल बी टोल्ड टू डू दैट इन अ पर्टिकुलर रेशियो ऑफ इनहेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन, होल्ड, एंड देयरबाय दैट रेशियो विल इंपैक्ट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड एन ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. ठीक है ना. तो इट्स नॉट वेरी सिंपल एज एक बता दो ऐसे हाथ उठा के हम आपको ऐसे स्ट्रेच करवाते हैं. इट इज वेरी सिंपल. या आपको एक आसन करवा देते हैं, बेंड इन पश्चिमोत्तानासन कर लिया आपने. नो, दैट इज अ पार्ट ऑफ योगा. हम योगा नहीं करवा रहे, हम लाइफ करवा रहे हैं. योगा इज कंप्लीटली 180 डिग्री ऑपोजिट टू लाइफ, क्योंकि वो मुक्ति का पक्ष है. तो हम क्या करवाएंगे? वी विल strengthen your organ and life factor. Like for whatever you want to make effort, you'll be able to make effort. Suppose you are studying, you have to focus and remember. For that you have to make effort. तो अगर आप एक तरीके का कुंभक करेंगे ना, तो वो effort making ability आपकी बढ़ जाती है, and suddenly you will become intelligent. अब एक posture में आपको लेके आते हैं. एक posture, simple posture जो आप बैठ के कर सकते हैं या खड़े होके कर सकते हैं, तो उसमें लेके आते हैं. But the movement you do is according to a particular ratio. आपको एक और एग्जांपल बता. If you inhale 1 unit, hold 1 unit, exhale 4 unit, it impacts your liver. If you inhale 4 unit, hold 2 unit, exhale 1 unit, it impacts your kidney. And if it is done in a particular posture, in a mudra, then it becomes enhanced. The impact becomes enhanced. वो impact enhance हो जाता है. Now, third thing, ये इतना ही नहीं है. Suddenly we create a focus at a particular point. हाँ? और जब भी hold कर रहे हैं, we tense our body towards a particular point of the body. Suddenly the result becomes multifold, and all these 3 things together can be done. तो आपको अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं तो नहीं समझ में आएगा अभी, बट when you do the program, we'll take you step by step. पहले ये करना, अच्छा simple movement that you will be able to do. Suddenly we'll say, okay, you have to hold it here for this many count, and suddenly we'll say when you hold, you have to focus there here at a particular and tense your body gently. Then suddenly we'll put a 4th point, क्योंकि ये आपके अंदर काम है, ये आपके बाहर काम नहीं है.
So it is towards the factors, the forces, which is making your body function. There are 84 basic forces which makes body function, or factors. You can call it factors also. How to address one factor? Now, why we have kept diagnosis in the third part? Because the moment we do diagnosis, everything about what you have learned will change according to your system. Because we'll know कौन सा aspect weak है इसका. Just by doing a little experiment upon yourself and sending us the result, we can analyze. We'll be able to know which aspect of your body has become weak, and suddenly we change everything towards that aspect. वो कोर या फिर रूट कॉज हो गया आपका. सडनली रूट कॉज के साथ साथ बाकी सारी चीजों को आप एड्रेस करने लगता है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा सर्कल, उसके ऊपर तीसरा सर्कल, उसके ऊपर चौथा सर्कल. दिस इज हाउ योर बॉडी इज. आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एंड नॉन फिजिकल बॉडी बोथ. So if you address the root cause, it addresses everything. But if you address the outermost circle, it will address one part of the outermost circle. That's it. So Kumbhak is about addressing the root cause. And the strength creating mechanism has various aspects which has to be integrated to be called as Kumbhak. And to be called as a particular Kumbhak, like Ameda Kumbhak. It's a whole science. ये इतना कमाल का science है ना, and we are trying to revive it because there are a lot of lineages which have connected with us, and they want that these things should again get revived because humanity need it at this point of time. So हम आपको एक तरीके से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि because you understand in that language, you don't understand in this language. Somehow you can correlate because it is your experience ultimately which matters. Okay, Geetu Beg ma'am, would you like to ask your question? Please unmute yourself. Yeah, namaste Swami ji. Actually, I have done your Stang Chikitsa program and actually I got benefited. मेरा को sciatica pain and all था. Now it is like very less. I am actually much better, and because I am doing it very religiously. Thank you for that. But now I want to join this because उससे था कि weight reduce होगा. मेरा weight नहीं reduce हुआ. जब मैंने घी खाया तो मेरा weight बढ़ गया था. तो this is आपका मसल मास बढ़ गया, हड्डियां डेंस हो गई, इस वजह से बढ़ा है, फैट नहीं बढ़ा. हाँ, but my stomach came out and मतलब कि जो भी है, मतलब कि I have put on more weight actually. तो ये जो प्रोग्राम होगा उसके साथ मैं वो वाली एक्सरसाइजेस भी कर पाऊंगी? नहीं. आपको कितना टाइम हो गया वो करते हुए? I joined that in August actually. अगस्त, और उसके बाद कस्टमाइजेशन के बाद कितना टाइम हो गया करते हुए? कस्टमाइजेशन मेरा अक्टूबर नवंबर में हुआ था ना. नवंबर में हुआ था. अक्टूबर, हाँ जी. हाँ, अभी अब नवंबर में हुआ था. नवंबर के बाद में ऐसा मान के चलो 5 महीने. हाँ जी, 5 महीने पूरे नहीं हुए, बट ऑलमोस्ट लाइक 5th month है. अभी आप कुछ मत ज्वाइन करो. 3 months मोर यू डू अष्टांगा. अच्छा, ठीक है. अष्टांगा लेकिन छोड़ना नहीं. ओके. 3 months मोर यू डू रिलीजियसली अष्टांगा. वैसे तो उसी से हो जाएगा. अदरवाइज अगर के बावजूद अगर आपका वेट जो है आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा, फिर आप ओके. क्योंकि अभी मेरे को बिल्कुल भी मेरे वेट में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, पर आई फील एनर्जेटिक, दैट इज देयर. आई फील मोटिवेटेड, पॉजिटिव, एंड मेरा पेन जो था, जो मेरे को वो sciatica पेन का था, वो ठीक हुआ है 90%. वो काफी फर्क पड़ा है. बट माय वेट इज समथिंग व्हिच आई रियली वांट टू रिड्यूस. डू इट फॉर 3 months मोर, उसके बाद आप ज्वाइन करो. ठीक है. थैंक यू स्वामी जी. थैंक यू सो मच. Any other question from any of the participants? We finished the chat questions. Yeah. Okay, A to everyone. If anyone has obesity and lumbar spondylitis, to which therapy you have to follow? Ameda or Ashtanga Kumbhak? Anyone. अगर आपको lumbar spondylitis है तो ये भी आपको ठीक कर देगा. अमेदा भी ठीक कर देगा. जॉइन अमेदा. स्वामी जी, मुझे ना इंटेस्टाइन के ऊपर, आंत के ऊपर एक छोटा सा मांस का टुकड़ा हो गया है. मतलब एक गुच्छा टाइप का मांस का हो गया है. क्या पॉसिबल है कि ये वो चला जाएगा.
चला जाएगा। निशा जी बोले। जी प्रणाम। जैसे कि आपने कहा था कि थायराइड के बाद ऑटोइम्यून डिसीज हो जाता है, वो मुझे लास्ट मंथ ही डायग्नोज हुआ है, तो क्या ये सही प्रोग्राम है मुझे हाँ, ज्वाइन करने? आप पहली चीज तो ये अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो कई चीजों को एड्रेस करता है। तो वेट उसका एक सामने वाला पक्ष है ना, एक पक्ष वेट एक सामने वाला पक्ष है, बट देयर आर मेनी अदर इश्यूज व्हिच दिस प्रोग्राम एड्रेसेस। तो अगर किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है तो इस प्रोग्राम को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ना फिक्स नहीं होता। आप सोचते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब 10 नंबर आ गए तो मतलब 10 नंबर आ गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग इम्यूनिटी, जी है ना, फ्लक्चुएटिंग इम्यूनिटी। वो कभी ठीक भी होगा, वो कभी फिर से ऊपर आएगा, क्योंकि रिस्क बढ़ गया बॉडी में। बॉडी में रिस्क बढ़ा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी ही, क्योंकि आपको वो बचाने के लिए है। नाउ बिकॉज वी हैव कंफ्यूज्ड द इम्यूनिटी, नाउ इट डजंट नो व्हाट टू डू। बचपन से कंफ्यूज कर रहे हैं ना अपनी इम्यूनिटी को। ये शरीर जो बचाता है हमें, उसको तो कंफ्यूज कर रहे हैं ना गोलियां डाल डाल के। So that is why we are getting into autoimmune disorder, and it will become an epidemic in the next 5 to 10 years. आप देखोगे हर एक को autoimmune disorder. So if you strengthen yourself, strengthen the body, create a balance of your body, and this is what we do also in this program. First of all, it is addressed towards something called as Garhya Patya Agni, which is the basis of how your body functions. गार्हय पत्य अग्नि की वजह से ही आपके सारे डाइजेस्टिव फंक्शन, इंटरनल फंक्शंस होते हैं। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन स्पेशली की बात करें तो दैट इज ओइंग टू गार्हय पत्य अग्नि। तो गार्हय पत्य अग्नि इज ऑल्सो one of the major contributors of, because of the disturbance of गार्हय पत्य अग्नि, it is a major contributor of autoimmune disorder. तो गार्हय पत्य अग्नि अगर आप ठीक होती है आपकी, and other things also is addressed, you'll see your autoimmune disorder will go off. It is not a difficult thing, but the way, if you see it, the way allopathy looks at autoimmune disorder, there is no solution. Yes, there is no But the way we look at autoimmune disorder, there is very simple solution. Again, it's just a different perspective through which we look at how this body function, how life functions. तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपका autoimmune disorder ठीक होगा। Any other question from the participants before we close the session? स्वामी जी बस एक चीज और पूछना था कि जैसे थायराइड वगैरह अगर हम प्रॉपरली ये करते हैं अष्टांग चिकित्सा, तो तभी भी हमको क्या टैबलेट्स लेना ही पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है टैबलेट्स लेना। टैबलेट्स लेने का अगर आपको शौक है तो ले सकते हैं, वरना तो आप बाद में छोड़ सकते हैं इसका। एक्चुअली क्या है कि आपके सिम्टम जैसे ही जाते हैं ना, तो आपको छोड़ देना चाहिए, तो आप और जल्दी रिकवरी होगी आपकी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ केमिकल योर रिकवरी इज हैम्पर्ड। जैसे ही केमिकल छोड़ना, थोड़ा आपको आपके सिम्टम रिलीफ हो गए, थोड़ा हिम्मत करके केमिकल छोड़ दो, आप देखेंगे आप और जल्दी रिकवर होंगे। ओके, थैंक यू। Okay. I think we have come to the end of the session since there are no other questions. There is one question. There is one question by Veena ji. I need to know how it works on PCOD. PCOD, see, it works on PCOD, but if you really want to address PCOD and PCOD only, you should join something called as, we run a program called as Garbhadhan program. Now, although it is for people who want to conceive, but it addresses all those problems of PCOD, hormonal imbalance, fibroid, uterus fibroid, and a problem related to uterus and other things. है ना, तो वो प्रोग्राम आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। This also addresses PCOD, but if you just have, if you have concern of fat, weight and PCOD, then you join this program. है ना, अगर आप सोचते हैं कि वेट भी मुझे रिड्यूस करना, PCOD मुझे ठीक करना, then you can join this program. Otherwise, you can join Garbhadhan program. So with that, we'll close this session. आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए।
और एक जिम्मेदारी जरूर निभाइए शरीर के लिए, क्योंकि आपका शरीर मूक है, बोल नहीं सकता। इस समय उसको बहुत जरूरत है आपके मदद की। उसको अंदर से आप थोड़ा सपोर्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें उसको। तो Mishti Taneja ma'am writes, can we gain weight? you can gain weight also. It is like balancing things up. You can gain weight through this program only. है ना? अगर ये, क्योंकि बैलेंस में लेके आना ना, हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि इसको काट के निकाल दो, हमारा बैलेंस में लेके आ जाओ। इफ यू हैव लेस वेट इट विल कम अप, इफ यू हैव मोर वेट इट विल कम डाउन। ठीक है जी। Thank you so much, Swami ji. Namaste. Good night. And good night to all the lovely participants. Please take care. And we end the session. Good night. Thank you, Neha ji. Thank you all.